गुड इवनिंग फ्रेंड्स। विनीता भुजवानी ज्ञान भारत में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत ही सुंदर सेशन चल रहे हैं हमारे ज्ञान भारत में। कर्म के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, पर अब पहली बार अपने धर्म, अपनी ड्यूटीज के बारे में जानेंगे। हम लोग अपनी ड्यूटीज, अपने धर्म को बहुत लाइटली लेते हैं। किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, जब मन पड़ा किया, क्योंकि हम सब अपने आप से, अपनी वासनाओं से, अपनी इच्छाओं से वशीभूत हैं। अपने आत्म सम्मोहन में ही रहकर हम पूरे समय काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सेशन हम सभी लोगों के लिए एक अलार्म की तरह है, एक चेतावनी की तरह है कि हम देखें कि हम मेडिटेशन तो कर रहे हैं, कर्म सिद्धांत को भी समझ रहे हैं, पर जो हमारे रोजमर्रा के, जो हमारी ड्यूटीज हैं, जो हमारे धर्म हैं, वो क्या पूरे कर पा रहे हैं? क्या उनको एक नजरअंदाज करते हुए क्या हम आगे ग्रोथ कर सकते हैं, या अपने इन छोटे मोटे अधूरे कामों के लिए फिर हमें कुछ लेसन पढ़ने आना पड़ेगा? बहुत ही सुंदर सर ने कल बताया था कि सत्य से ही धर्म का जन्म होता है। सत्य क्या है फ्रेंड्स? कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, जो शरीर को धारण करके यहाँ पर मानव अनुभव के द्वारा ज्ञान लेने आई है। पर इस सत्य को हमें विस्मृत कर दिया जाता है ताकि हम अच्छे से अपने लेसन को, अपने पाठों को पढ़ सकें। पर ये जो विस्मृत करना हुआ, या जिसे हम एमनेशिया कहें, वही हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट बनता है, क्योंकि हम अपने आप को अपनी बॉडी से आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। सोचते हैं कि यही पृथ्वी हमारा संसार है, ये हमारा परिवार, हमारी संपत्ति, सब कुछ हमारा ही है। बहुत से लोग इसी में ही फंसकर अपने बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को पाना, कई कई बार तो देखा गया है कि हजारों वर्ष तक के आत्मा इस साइकिल में घूमते रहती है, जब तक कि वो इस सब सत्य को न समझ ले। सत्य को समझना है, धर्म को समझना है, पर धर्म को सिर्फ समझना ही नहीं है फ्रेंड, अपने जीवन में, अपने रोजमर्रा की लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसका पालन करना है। तो बहुत ही सुंदर सेशन चल रहे हैं और आप लोग के फीडबैक मुझे बराबर मिल रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। जहां कहीं पे भी आपके डाउट है या क्वेश्चन है, आप हमें प्रश्न भेज रहे हैं। प्रश्नों की पूरी लिस्ट बनाई गई है। एक दो दिन में जब सर के मेन धर्मा का हमारा ज्ञान कंप्लीट हो जाएगा, तो वो सारे क्वेश्चंस को लेकर हमें आंसर करेंगे। तो आप लोग अच्छे से सुनिए, नोट्स बनाइए, समझिए। जब तक कि आप आत्म मंथन नहीं करेंगे, तब तक आप इसे समझ नहीं पाएंगे। और उसके बावजूद यदि कुछ प्रश्न रह जाते हैं, तो बिल्कुल आप माही को, मुझे या ग्रुप में भी आप डाल सकते हैं। हम सबको कलेक्ट करके एक लिस्ट बना रहे हैं। हमारा उद्देश्य आपको एनलाइटमेंट के पाथ पर सहयोग करना है। तो कोई भी आपके में जो शंका है या दुविधा है, उसको दूर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग का इतना प्यारा फीडबैक देने के लिए। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल फिजिकल रिट्रीट की अनाउंसमेंट की थी, बहुत बहुत लोग उत्साहित होकर उसमें अपना नाम दर्ज कराए हैं। 25 ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं हमारी लिस्ट में। हमारा टारगेट 40 का है, तो 15 सीट्स और हैं। जबकि अभी बताइए 24 घंटा भी नहीं हुआ है। तो आप लोग का उत्साह, आप लोग का प्यार दिखा रहा है कि आप अपने आप को बदलने के लिए, अपने ऊपर काम करने के लिए, अपने को बेस्ट गिफ्ट देने के लिए तैयार हैं। तो थैंक यू वेरी मच, जो आप लोग इतना बढ़ चढ़ के आगे आते हैं और हमको और मोटिवेट करते हैं। जो ग्रुप बनाया गया है सेल्फ हीलिंग रिट्रीट के नाम से, उसमें सभी लोगों को ऐड कर दिया गया है। अगर कोई चूक गया है तो फिर से हम लोगों को
जो 2 नाम मैंने दिए हैं, मीनाक्षी और ममता जी का नाम दिया है मैंने, उसके अलावा अगर आपको सुविधा अनुसार मुझे भी मैसेज करना है या माही को भी आप कर सकते, तो वो फॉरवर्ड कर देंगे हम और उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। और उससे संबंधित, रिट्रीट से संबंधित सारे क्वेश्चंस के आंसर हम वहीं पर देंगे। यहाँ पर हम सिर्फ ध्यान और ज्ञान की बातें करेंगे। तो रिट्रीट से संबंधित जितने प्रश्न हैं आपके, वो ग्रुप में ही आप पूछिए, या आफ्टर सेशन जब टाइम रहेगा तो मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगी। और यदि कोई आज सिर्फ जुड़ा है जिसको रिट्रीट के बारे में नहीं मालूम है, तो फ्रेंड्स 5 से 11 सितंबर तक के फिजिकल रिट्रीट का आयोजन किया गया है, जो पिरामिड वैली बेंगलुरु में है। वहां पर सिंगल ऑक्यूपेंसी आपको रूम दिया जाएगा, क्योंकि ये इस रिट्रीट में आपकी मेंटल और इमोशनल हीलिंग होती है, तो आपको एक कमरे में अलग ही रहना है। किसी के साथ भी अपने इमोशंस, अपने थॉट्स को हम शेयर नहीं करते हैं। आपको रूम सिंगल ऑक्यूपेंसी के मिलेंगे। तीनों टाइम आपको शाकाहारी सात्विक फूड मिलेगा और आपको वहां पर 6 घंटे मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज और मौना का अभ्यास कराया जाएगा। इन सबका उद्देश्य है कि आपकी इच्छा शक्ति, जिसके बारे में कल सर बात कर रहे थे, विल पावर को इंक्रीज करना है। आपको अपने आप को एक डिसिप्लिन में रहना सीखना है। तो जैसे आप इस रिट्रीट में पार्टिसिपेट करेंगे और 6 दिन के बाद अपने घर लौटेंगे, तो एक न्यू एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा अपने आप में बदलाव लाएंगे और आने वाली जो आपकी जर्नी है वो बहुत ही सुंदर होगी। तो जो भी जा सकता है वो अपना नाम लिखा ले। इसके हमने फीस 33,000 पर पर्सन रखा है। इसमें से 1 रुपए भी ज्ञान भारत अपने पास नहीं रखेगा। ये पूरा पैसा इस रिट्रीट में यूज हो रहा है। तो ये 33,000 अगर आप अपने को गिफ्ट देना चाहते हैं तो एज अ रिट्रीट आप गिफ्ट दे सकते हैं। 5 से 11 सितंबर मंडे को निकलना है और संडे को वापसी है। चलिए फ्रेंड्स, जब तक के सर आ रहे हैं तब तक के हम वेट कर सकते हैं। जैसा कि सर शुरू में 1 घंटा ध्यान कराते हैं, उसके बाद हम ज्ञान को सुनेंगे। अभी आप लोग हैंड रेज नहीं करिए, क्योंकि अब टाइम हो रहा है, सर कभी भी जुड़ सकते हैं, तो हम अभी कोई भी प्रश्न को नहीं लेंगे। एक मिनट फ्रेंड्स, मुझे लिंक शेयर करनी है। तो नमस्ते सर, वेलकम टू ज्ञान भारत। Namaste everyone. So let us begin with meditation as usual. Drink some water. Make yourself comfortable. Darken your room. So let us start the meditation.
अपने को ध्यान के लिए तैयार कर लीजिए। थोड़ा पानी पीकर आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और अपनी आंखों को झुंझुनों के साथ
I
Final 10 seconds. Gently place your hands on your eyes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. You may slowly open your eyes whenever you are ready. And immediately drink water. Stretch yourself. Relax. ध्यान से बाहर आके अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए और पानी पी लीजिए. Okay, so we'll continue with our most important topic, the Dharma topic. Just take your books and pen. अपनी कॉपी पेन ले लीजिए क्योंकि सर कुछ इम्पोर्टेंट लिखाने वाले हैं और अगर हम लिखेंगे तो और अच्छे से हम समझ पाएंगे और उसको अपने जीवन में उतार पाएंगे. तो सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं. First, let us recap what we have discussed. So yesterday we have discussed Dharma from Vaisheshikam. We have discussed Dharma from Bhagavad Gita. And we also spoke about the Jesus Christ teaching, the righteousness. Dharma, in other words, means righteousness. So let us have a quick recap. Varnasrama Dharma means, Varna means colors, colors of the aura. Ashrama means the age of the body. So according to the age of the soul and age of the body, our Dharma keeps changing. See, in our tradition in India, there is a certain classification of Brahmins, Vaishyas, Kshatriyas, Sudras. This classification is based on the Varnasrama Dharma. And again, we have in Hinduism, Hinduism is not a religion as such, it's a way of life. So we believed in Vasudhaiva Kutumbakam. That means the whole planet Earth is one family. So there was never a hierarchy in the caste system. It was later on, people for their political needs, they have built up certain hierarchy. But our ancient Hindu scriptures, they spoke about Vasudhaiva Kutumbakam and Varnasrama Dharma. So that means whatever the age of the soul you are in, we all are one family. It's just that if a person is having only few lifetimes, he's taken care in a certain way. A person who has more lifetimes is taken care in a certain way. A person who is very old soul, he is taken care in a certain way and he has more duties. So that means as the age of the soul progresses, the dharma increases. So I gave an example yesterday about Dharmaraja before giving judgment.
He first asked, what do you do? There was an investigation. What do you do? So that by asking what profession you are into, what do you do? By having this interrogation, he understand what is the age of his soul. So accordingly, the punishment has been decided. But the Brahmin gets the most punishment because he knows what is truth. And knowing what is the truth, he has committed something bad. So he gets the maximum punishment. So after the Brahmin, a Kshatriya. The role of the Kshatriya is to protect. The role of the Brahmin, when I say Brahmin, that means he has a Brahmagyan. It doesn't mean he is born in the Brahmin family. Any person who has a Brahmagyan is a Brahmin. Any person who has the tendency to help others, to protect others, he is a Kshatriya. A Kshatriya will give his own life to protect his family, to protect his community, to protect the land, the country. So he is a Kshatriya. Then the next is a Vaisya. A Vaisya is a person who does business, trading. And there is also a Vaishya Dharma, where when he trades, he makes more money and he has to share the money for the welfare of the society. And then the next category was the people who do the hard work, physical labor. Sudras. Their mind is not fully developed. Their intellect is not fully developed. A Sudra works using the body. A Vaishya works using the mind. He does the business using the mind. A Kshatriya uses intellect. And a Brahmin uses wisdom. But everybody is needed. We need the farmers. We need the workers to build the house. Without farmers, without workers, the society cannot survive. Without traders, the society cannot survive. Without Kshatriya, there is no safety, security. Without a person who is having the Brahmagyan, he cannot advise the king what is right, what is wrong. He cannot take care of the well-being of the whole kingdom. He cannot speak the truth. The education system dependent on the person who has a Brahmagyan. Because in the olden days, there were gurukuls. Only enlightened people used to teach. So in the society, everybody is important, equally important. So there was never a hierarchy. The hierarchy came much later on. So we believe in Vasudhaiva Kutumbakam. The reason why am I explaining this is if you want to understand the Varnasrama Dharma, you have to understand as your aura keeps glowing, increasing, that means you are more an evolved soul. The more you are an evolved soul, the more you have greater responsibilities, your dharma changes. For a baby soul and an infant soul, mistakes are forgiven. But for an old soul, they cannot do any mistake because their responsibility is more, their duty is more. So it is very important that whoever is in this Zoom session, I'm absolutely sure we are all old soul. Sorry. We don't belong to infant soul. We don't belong to young soul, mature soul. We are all absolutely old soul because only old soul comes into meditation, my dear friends. Mature souls don't come into meditation. Young souls, definitely they are not interested in meditation. Only old souls are interested to know the truth. So if you want to understand, you are joining this Zoom session and you want to understand what is Dharma, that means you are definitely an old soul. And you are meditating. So your responsibilities, our responsibilities are greater. So that means we cannot afford to make any mistakes. If you make a mistake, what happens? Then we pay heavy price. That is what is the judgment given by Dharmaraja.
A Brahmin, a Brahmagnana, a person who is having a Brahmagyan, pays the heavy price. So as meditators, it is very important to live in awareness all the time. What is Dharma? Dharma simply means duty. Duty, in other words, means righteousness. In other words, means pure, rustic common sense. When you are doing your duty, you are in Dharma. When you have not done your duty, that means you are in adharma. To know the duty, you have to meditate first. Unless you are in the truth, you cannot understand Dharma. So only a meditator can understand Dharma. Okay, madam, you can translate so far. सर कह रहे हैं कि हमने धर्म को कल बहुत अलग अलग तरीके से समझा, जीसस अपने हिंदू धर्म के अनुसार, गीता के अनुसार, सबके अनुसार मैंने आप लोगों को बताया है। धर्म का अर्थ राइटियसनेस होता है, जिसका अर्थ है धार्मिक। धार्मिक का यहाँ पे फिर से फ्रेंड आप लोग को याद दिला दूं कि कोई भी संप्रदाय हिंदू मुस्लिम मगर नहीं है, धर्म अलग है। तो उन्होंने कहा कि वर्णाश्रम जो हम बात करते हैं उसका अर्थ होता है कि ऑरा का कलर कैसा है, उस सोल की एज क्या है, क्योंकि सोल की एज के अनुसार हम इन्फेंट, बेबी और इन सब में डिवाइड करते हैं, उसी के अनुसार ऑरा रिफ्लेक्ट करती है और ये हमेशा चेंज होते रहती है। हमारे ट्रेडिशन में कुछ क्लासेस बनी हुई हैं, जैसे हम सभी जानते हैं शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये वर्णाश्रम धर्म के अनुसार है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीने का तरीका है, वे ऑफ लाइफ है, जिसका मुख्य उद्देश्य है वसुदैव कुटुंबकम। पूरी पृथ्वी हमारी एक परिवार है, कोई भी उच्च नीच जाति का नहीं है, पर कुछ राजनीतियों ने आकर इसको पदानुक्रम दे दिया, हायरार्की के अनुसार उसको बांट दिया गया। जबकि एंशिएंट स्क्रिप्चर में वसुदैव कुटुंबकम वर्ण आश्रम के बारे में बात की गई थी, जो कि एज ऑफ द सोल के बारे में थी, क्योंकि जिस तरीके की एज होती है हमारी सोल की, वही हमारे परिवार होता है। चाहे हम ब्रह्मज्ञानी हैं तो ब्राह्मण रहेंगे, और अगर हम सिर्फ शरीर के रूप में काम कर रहे हैं तो शूद्र रहेंगे। तो उसके अनुसार उन्होंने वसुदैव कुटुंबकम और वर्णाश्रम के बारे में बात की थी। एग्जाम्पल के तौर पे कि यदि कोई आत्मा कुछ ही जन्म ली है पृथ्वी पे, तो उसके जीने का तरीका एक अलग वे में रहेगा, अलग तरीका रहेगा, और उसके धर्म अलग रहेंगे। कुछ ज्यादा जन्म लेने के बाद उसका जीने का तरीका भी बदल जाएगा और उसकी ड्यूटीज भी बदल जाएंगी। और जो बहुत पुरानी सोल्स होती हैं, जो बार बार जन्म लेती हैं, ओल्ड सोल्स, उनके भी जीने का तरीका बिल्कुल अलग होएगा और उनके धर्म अलग होंगे। तो जैसे जैसे आत्मा प्रोग्रेस करते जाती है, उनका धर्म बढ़ते जाता है। कल जो मैंने एग्जाम्पल बताया था धर्मराज का, और जो महाभारत में इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें धर्मराज सबसे पहले व्यक्ति से पूछता है, उस अपराधी से, कि तुम करते क्या हो। इसके द्वारा वो उस आत्मा की प्रोग्रेस के बारे में जानना चाह रहा था कि उसकी एज क्या है, और उसके बाद ही उसने उस सोल का पनिशमेंट डिसाइड किया। हम ब्राह्मण उसको कहते हैं जो जिसको ब्रह्म ज्ञान है। तो जब उसने पंडित को, जो जिसके पास ब्रह्म ज्ञान था, जो अब सत्य को जानता था, उसके बावजूद उसने गलती की, इसीलिए उसको सबसे ज्यादा दंड दिया गया। और जो व्यक्ति किसी दूसरे की हेल्प करता है, दूसरे की सुरक्षा करता है, वो सोल को हम क्षत्रिय सोल के रूप में जानते हैं, जिसका काम है अपने परिवार की सुरक्षा, अपने कम्युनिटी की सुरक्षा, अपने पूरे लैंड, अपने पूरे भूमि की सुरक्षा। वैश्य सोल हम उसको कहते हैं जो बिजनेस करता है, उसका काम है अधिक से अधिक पैसा कमाना, और पैसा कमा के धर्मानुसार वो सोसाइटी को के कल्याण के लिए वो पैसा डोनेट करे। और जो व्यक्ति सिर्फ फिजिकल वर्क करता है, जिसकी बुद्धि पूरी विकसित नहीं हुई है, उसे हम शूद्र कहते हैं, काम के अनुसार नहीं, उसके ऑरा के अनुसार।
तो उन्होंने कहा कि शूद्र अपने सिर्फ शरीर के अनुसार काम करता है, वैश्य मन के अनुसार काम करता है, क्षत्रिय बुद्धि के अनुसार काम करता है और ब्राह्मण ज्ञान के अनुसार। जैसे पहले जमानों में राजा को जब कोई सलाह दी जाती थी तो कोई वैश्य और क्षत्रिय उनको सलाह नहीं देता था, ब्रह्मज्ञानी अर्थात ब्राह्मण ही उसको सलाह देता था और उसको ही शिक्षा देने का अधिकार था। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे फार्मर्स हों, ट्रेडर्स हों या पंडित हों और क्षत्रिय हों, ये सभी हमारे समाज के लिए उतने सभी लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कोई भी पदानुक्रम की जरूरत नहीं है, हायरार्की की जरूरत नहीं है, ये तो बाद में हायरार्की आई। कल जब मैं वर्णाश्रम की बात कर रहा था तो वही मैं कह रहा हूं कि ऑरा ग्लोइंग की बात थी कि जितना आपकी ऑरा चमकदार होती है, शाइन करती है, उतनी ही आत्मा ज्यादा विकसित होती है और जितनी आत्मा विकसित होती है उतनी ही ज्यादा उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। बेबी सोल, इन्फेंट सोल, मैच्योर सोल को गलतियों को माफ किया जा सकता है, पर जो विकसित आत्माएं हैं उनकी गलतियों को माफ नहीं किया जा सकता। इस जून सोल में जो भी आप लोग आ रहे हैं, कोई भी इन्फेंट, यंग और मैच्योर सोल नहीं है, सभी ओल्ड सोल्स हैं, क्योंकि आप सभी मेडिटेशन भी कर रहे हैं और इस ट्रुथ के बारे में जान भी रहे हैं। तो धर्मा को जब आप जान रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप सभी ओल्ड सोल्स हैं। तो आप सभी लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप कोई भी गलती न करें। अगर गलती करेंगे तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, वही धर्मराज हमको समझा रहे हैं। तो एक ध्यानी होने के नाते आप अपने जीवन को फुली अवेयरनेस में जिया करिए, हर समय आप चौकन्ने रहिए। तो धर्म क्या है? धर्म हमारी ड्यूटी है, हमारे कर्तव्य हैं। इसका अर्थ होता है राइटियसनेस, अर्थात धार्मिक, कि उस क्षण में आपका धर्म क्या है। और ये एक प्योर कॉमन सेंस की भी बात है कि आपको उस समय क्या करना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने ड्यूटी को पूरा करता है वो धर्म में है, जो अपने ड्यूटी को पूरा नहीं करता है वो अधर्म में है। तो अपने धर्म को, अपने ड्यूटी को हम कैसे जाने? उसके लिए हमें सबसे पहले मेडिटेशन करना चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सिर्फ एक मेडिटेटर ही जान सकता है कि उसकी ड्यूटी, उसके धर्म क्या है। थैंक यू। At any given point of time, it is very important to understand what to do, what not to do. So then, why we are discussing about this dharma concept is how we can help ourselves. What is the reason? What is the motto? The motto is how we can help ourselves, how we can make our lives more happier, safer, and how we can live the life to the fullest. The more you understand dharma, the more you are helping yourself to live the life to the fullest. Always you have to remember this. Dharmo rakshati rakshitaha. That means when you take care of your dharma, when you take care of your own dharma, that dharma which is taken care by you will in turn protect you, will in turn safeguard you, will in turn take care of you. You don't need to do anything, just take care of your dharma. That dharma will take care of you. Dharmo rakshati rakshitaha. At any given point of time, you're always doing your dharma, then you don't need to fear anybody. Your life is taken care. See, we sometimes go through ups and downs. The fact is, we always go through ups and downs. Sometimes, even though we are meditators, we are meditating, we are reading a lot of books. The more you meditate, the more your karmic baggage gets cleared. Once your prarabdha karma is cleared, then you bring the karma from the sanchita. So only meditators will have more challenges, because the more the challenges, the more you are working on your karma. So you feel sometimes down, you feel sometimes insecure, sometimes you feel like you cannot adjust, or you may not be understood by your family members or by your society. In family situations where within one family, there might be a
very old soul, and also there might be a young soul, a baby soul. All in one physical family, we have many soul combinations also. So how can we live a balanced life? How can we maintain equanimity? Equanimity means you feeling a sense of well-being in any given situation. That is equanimity. So how can, in all the situations, in all the ups and downs, how can you be composed? How can you be calm, cool, and composed? When you are able to be calm, cool, and composed in any given situation, in the challenging situations, when there is some situations which threaten you, or situations which are happy situations, sad situations, any kind of situations, you are composed. That means you are in equanimity. So how can you maintain it? How can you have that feeling, the wellness that I am taken care, I am enjoying my life, I am happy in my life? That comes only when you follow your dharma. At any given point of time in your life, if you are not feeling taken care, your life is not happy, that means the first and the foremost you have to remember is, if I do my dharma, I will be naturally be happy. And I want all of you to experiment. Whenever you do your dharma, there will be a smile on your face. There will be happiness radiating in your heart. When you do your dharma, you will sleep happily. If you don't do your dharma, the sleep also you will not be peaceful sleep. And there will be a lot of health problems. There will be a lot of mental worries. Whenever you are having mental worries and not having a peaceful sleep, that means you are not doing the dharma. So to understand what is my dharma, that is the question. How do I know what is my dharma? What should I do? That we will discuss. सर कह रहे हैं कि किसी भी क्षण में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, यही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि हम इस सबको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इससे हम अपने आप को, स्वयं को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं या मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि या अपने जीवन को कैसे मैं सुरक्षित रख सकता हूँ, क्या इन सब के डिस्कशन से मेरी लाइफ सुरक्षित और खुश रहेगी, क्या मैं अपने जीवन को अच्छे से जी पाऊंगा। तो सर कहते हैं कि जितना आप धर्म को समझते जाएंगे उतना ही आपका जीवन उत्सव वाला हो जाएगा, क्योंकि धर्मो रक्षित रक्षित। तुम धर्म का ख्याल करोगे अर्थात धर्म का पालन करोगे तो वापसी में धर्म तुम्हें बचाएगा। आपका काम सिर्फ अपने धर्म का पालन करना है। किसी भी क्षण बिना डर के अपने धर्म का पालन आप करते जाइए। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं, बुक्स भी पढ़ रहे हैं, पर उसके बावजूद आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। वो इसलिए आते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं और अपने कर्म का प्रक्षालन शुरू करते हैं तो पहले हम अपने प्रारब्ध कर्म का प्रक्षालन करते हैं, उसके बाद हम अपने फ्री विल के द्वारा अपने संचित कर्म को भी बैलेंस करते हैं। ये सभी जो आपके डाउनफॉल आ रहे हैं, जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उसके कारण आप घबरा जाते हैं, आप असुरक्षित महसूस करते हैं और कभी कभी आप समझ नहीं पाते कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके फैमिली और आपकी सोसाइटी में आपके साथ आपके तनाव बढ़ते जाते हैं। तो जो भी आपकी फैमिली होती है उसमें जरूरी नहीं है कि आप ही के समान सभी ओल्ड सोल हो, कई यंग सोल और इन्फेंट सोल भी होते हैं। ये पृथ्वी पे हमें गिफ्ट दी जाती है कि एक ही परिवार में हम अलग अलग टाइप की सोल आके एक दूसरे को आत्मिक विकास में मदद करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन होते हैं। पर इन सब के बावजूद हमको समभाव का भाव रखना चाहिए। इक्वेनिमिटी मतलब समभाव। तो आप तभी आप मुक्त महसूस कर पाएंगे। तो जो भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आप पूरे समय शांत चित्त, एकदम आरामदायक और शांत रहिए।
कोई भी परिस्थिति हो, चाहे वो सुख की हो, चाहे दुख की हो, चाहे खतरे की हो, चाहे संकट की हो, आपको बिल्कुल एक न्यूट्रल भाव में ही रहना चाहिए, एक साक्षी भाव ही समझ लीजिए आप कि उसमें रहना चाहिए। तो इसको आप कैसे मेंटेन करेंगे? तो सर कहते हैं कि आपको ये तभी महसूस होगा जब आपको लगेगा कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं खुश हूँ, तब जब आप अपने धर्म का पालन करेंगे। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप समझ जाइए कि आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। और धर्म का जब आप पालन करते हैं तो आप खुश रहते हैं, आपके चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान रहती है, आप क्योंकि आपका हृदय उस समय प्रसन्नचित रहता है। और आप जब सोते हैं तो बहुत ही खुशी से आरामदायक इस नींद में जाते हैं। अगर आप धर्म का पालन नहीं करेंगे तो आपकी नींद भी बाधा पहुंचाएगी, आपके पास मानसिक परेशानियां बहुत रहेंगी, आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तब आप अपने को चेक कर लीजिए कि आप अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो हर एक को जानने का मन होगा कि मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए अपने जीवन में, वही अभी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। So this is where the types of the dharmas comes. These types of the dharmas we all have to do in our day-to-day life. So please note down very carefully. The first comes dhyana dharma. Dhyana dharma, the most important dharma of all the dharmas. We have many dharmas, but the first and the foremost, the most important is dhyana dharma. First comes first, second comes second. So the first is dhyana dharma. That should be given the highest priority. What is dhyana dharma? Dhyana dharma means we have to meditate every day without exception. Every day. Like we take food for our body, we should. Meditation is the food for the soul. Every day we have to nourish the soul. Every day we have to take care of our soul, our Atma. So we have to meditate every day. It is our duty. It's not a choice. It is our duty. If you don't do this duty, then you are in adharma. And adharma naturally leads to abhagya, suffering. But if you do this dharma, then it leads to saubhagya. Saubhagya means welfare, progress, comforts, happiness. All put together is saubhagya. Whatever you are, whoever you are, either you can be a musician, you can be a homemaker, or you can be a social worker, you can be an artist. It is compulsory. In Bhagavad Gita, Krishna kept aside all the dharmas and asked Arjuna to focus on this dharma, Yogi Bhava Arjuna. And Krishna asked Arjuna to keep aside all the dharmas and follow the Atma Dharma. So the most important of all the dharmas is dhyana dharma. In other words, it is also called swadharma. We have only one swadharma, which is to meditate every day. All the rest of the dharmas are paradharmas. Okay, madam. सर अभी हमें प्रकार बताएंगे कि धर्म के कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला उन्होंने बताया है ध्यान धर्म, ध्याना धर्म। ये सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सभी धर्म में पहले नंबर पर है और सर्वोच्च धर्म है। इसको हमें अपने जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें रोज ही ध्यान करना चाहिए। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, वैसे ही मेडिटेशन हमारी आत्मा का पोषण है, इसलिए रोज हमें अपने मेडिटेशन करने का ख्याल रखना है। मेडिटेशन करना आपके जीवन में चुनाव नहीं है, ये आपका धर्म है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आप अधर्म में हैं और आप अभाग्यशाली बनेंगे। जब मेडिटेशन करते हैं तो सौभाग्य आता है। इसका अर्थ है आपके पास समृद्धि, आराम, खुशी,
अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ आपके पास आता है। ये मायने नहीं रखता कि तुम कहाँ हो और तुम क्या करते हो, चाहे तुम गृहिणी हो, चाहे आप एक समाज सेविका का काम कर रहे हो, चाहे आर्टिस्ट हो, जो भी आप हो, आपके लिए ये आवश्यक है कि आप रोज मेडिटेशन करें। गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा है, योगी भव अर्जुना। उन्होंने कहा कि सारे धर्मों को एक किनारे रख लो और अपने आत्मधर्म का पालन करो। इसे ही हम स्वधर्मा भी कहते हैं, अर्थात रोज मेडिटेशन करना आपके लिए स्वधर्मा है, बाकी सब धर्मा परोधर्मा है। थैंक यू। So the second is ahimsa dharma. Once again, whatever is the rightness is called dharma. That which is not rightness, that which is away from the rightness, that which is around the rightness, that which is aside from the rightness is adharma. The reason I'm telling you is sometimes the mind tricks us. Yes, I'm not killing the animals, but it's somebody else killing the animals. I'm just eating it. Or somebody says, oh, I'm not even buying. Just I went to a friend's house, he offered so lovingly, I just ate. Or sometimes the situation is, I don't eat, but I just cook for my husband and children. So anything which is not right, anything which is away from rightness, aside from rightness, around from rightness, everything is adharma. Among all the paradharmas, the most important paradharma is ahimsa. So that's why they say ahimsa paramo dharma. The most important dharma of all the paradharmas is ahimsa. Ahimsa simply means non-violence and non-interference. Ahimsa means non-violence and non-interference. The most important of all the dharmas is dhyana dharma. The second most important of all the dharmas is ahimsa dharma. And you have to be right in any given situation. You cannot violate the freedom of other beings. If you violate the freedom of other beings, then your freedom will be violated. That's why they say ahimsa paramo dharma. When I say himsa, that relates only to the body. Mental himsa, verbal himsa is not a himsa. This is something interesting you have to understand. Only when you hurt somebody physically, that is himsa. You speak some bad words, you speak rudely, you abuse verbally, and somebody gets hurt, you are not responsible. You see, Buddha, when he was going from town to town, village to village, there are many situations where people scold him, where people abuse him. But Buddha was never affected. He didn't take it. One day, a person was scolding so much because he went for bhiksha. Then the person scolded, you are looking so young, why can't you work and earn your own food? And why are you begging? And you people are just cheaters, these, that. He was continuously scolding. The disciples were very much agitated. But Buddha kept on smiling and he walked away. Then later on, the disciples asked Buddha, why don't you say anything back to him? He is abusing you so much. Then Buddha said, if somebody gives you bhiksha, and if you don't receive that bhiksha,
who will have that bhiksha? Say, if somebody is giving you a bhiksha and you are not receiving it, then it will be with the person who is giving only. It will be with himself only. He said, whatever he is speaking, I never received it. So it is with himself only. So verbal abuse, mental abuse is not himsa. Only when you allow yourself to get hurt verbally, mentally, emotionally, then you will get hurt. So the responsibility is yours. So we have to understand himsa relates to only body. Mental abuse, verbal abuse doesn't come under himsa. To kill an animal, to torture an animal, to hurt a living being, to physically hurt a human, these all comes under ahimsa. You cannot interfere in the other living beings' affairs. A fish is happily swimming in the water. You cannot take the fish out of the water. You are interfering. Ahimsa. You cannot torture the animals in the name of sport. That is ahimsa. You cannot treat your maid. You cannot abuse your maid physically. That is ahimsa. You have to take care of the people who work for you. You are not giving food. Because you are not giving food, the other person who is working for you, he is physically getting hurt. That is himsa. So we have to understand, if you are getting hurt verbally, it is your responsibility not to get hurt. But somebody is hurting you physically, yes, that is his responsibility. He has to pay the price. Law of karma applies in any given situation. What you do comes back to you. You physically harm somebody, you are in himsa, the himsa will come back to you. This is pure law of karma. So once again, ahimsa paramo dharma. Himsa relates to physical. Because of your action, any living being is physically hurt. That is himsa. The second most important dharma among all the dharmas. Okay. You are mute, madam. सॉरी सर। दूसरा धर्म अहिंसा धर्म है। धर्म का अर्थ राइटियसनेस है। जो सही नहीं है या सही होने से दूर है या उससे अलग है, वो अधर्म है। हमारा मन बहुत ही चतुर चालाकियां करता है। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं तो जानवर को नहीं मार रहा हूं, मैं तो सिर्फ खरीद कर खा रहा हूं, या मैं खरीद भी नहीं रहा, मेरे फ्रेंड मेरे लिए पका कर ला रहा है। या आप कह सकते हैं कि मैं तो नहीं खाती पर मैं अपनी फैमिली के लिए नॉनवेज पका रही हूं, तब भी आप अधर्म ही कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट, परंतु वो हिंसा ही है, वो आप अधर्म ही कर रहे हैं। तो पराधर्म हमारा जो उसमें होता है, सबसे सर्वोच्च उसमें नंबर पे आता है, वो अहिंसा है। अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस और नॉन इंटरफियरेंस है। अहिंसा और हस्तक्षेप नहीं करना किसी के भी लाइफ में। तो सभी परिस्थिति में तुम किसी के भी जीवन की आजादी में उल्लंघन नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने अहिंसा परमो धर्म कह रहा हूँ। हिंसा का अर्थ आपका सिर्फ बॉडी और फिजिकली होता है। अगर आप किसी को शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसे हिंसा कहते हैं। वर्बली और मेंटली अगर कोई अब्यूज कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं, तो वो अगर आप कह रहे हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई दूसरा कह रहा है। सर ये वाला मुझे थोड़ा नहीं समझ में आया, बिकॉज we believe that mentally and verbally when we abuse, that it is also karma. No, that is a wrong understanding. If somebody scolds you and you are receiving it because you are weak-minded,
You are getting hurt because you are weak mind. So that doesn't come under ahimsa. If you are strong-minded, then nobody can hurt you. सर कह रहे हैं कि जब सामने वाला कोई आपको डांट रहा है और आप दुखी हो रहे हैं, तो वो आप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप कमजोर माइंड के हैं और आप उसको अलाउ कर रहे हैं लेने के लिए. ठीक है सर, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग थी. तो उन्होंने एक इंसिडेंट बताया कि बुद्धा गांव-गांव जाके ध्यान का प्रचार प्रसार करते थे. कई लोग उनको गाली भी देते थे, पर उनको कोई भी प्रभाव नहीं होता था. एक दिन जब वो अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो एक आदमी ने उन्हें बहुत डांटा कि तुम बहुत जवान दिख रहे हो, फिर भी भीख मांग रहे हो, तुम धोखेबाज हो, ऐसे कहकर उसने बहुत ही अपशब्द बोले. तो बुद्धा के शिष्य बहुत नाराज हो गए, और पर बुद्धा के चेहरे पे हमेशा मुस्कान ही थी. तो शिष्य उनसे पूछते हैं कि आपने जब वो आपको इतना भला बुरा कह रहा था, तो आपने कुछ भी क्यों नहीं जवाब दिया. तो बुद्धा ने उसका आंसर दिया कि यदि कोई तुम्हें भिक्षा दे और तुम उसे स्वीकार नहीं करते हो, तो वो भिक्षा जो दे रहा है उसको वो सामान किसके पास रहेगा. तो शिष्य ने कहा उसी के पास रहेगा, जब हम नहीं लेंगे तो उसी के पास रहेगा. तो बुद्धा ने कहा बिल्कुल यही है कि वो जब मुझे चिल्ला रहा था, अपशब्द बोल रहा था, तो वो मैंने अपशब्द को लिया ही नहीं, तो वो उसी के पास रह गया. अगर तुम मेंटली या वर्बली खुद ले रहे हो, तो इसका अर्थ है कि आप अलाउ कर रहे हो उसको. मेरे हिंसा का अर्थ यहाँ पर है कि किसी भी प्राणी को तकलीफ देना या उसे मारना हिंसा है. किसी भी प्राणी के जीवन में आप हस्तक्षेप मत करिए. किसी भी मछली को पानी में से निकालना भी उसके साथ हस्तक्षेप है. अपने खेलकूद के लिए जब हम किसी जानवर का सहारा लेते हैं, वो भी गलत है. या आप किसी व्यक्ति से काम ले रहे हैं परंतु उसको खाना प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, तब भी वो हिंसा है. अगर आप किसी के साथ हिंसा करते हैं, तो वही चीजें कर्मा के अनुसार आपके पास वापस आता है. अगर आप हिंसा करेंगे तो हिंसा भी आपके पास वापस आएगी. इसीलिए अहिंसा परमो धर्म. Here we have to understand that we should not mind others' opinions. We should not mind others' words. So that doesn't come under himsa. But physical torture is himsa. For example, you kept a bird in the cage. It is a physical torture for the bird. The animals which are kept in the cages are physically tortured. They might give food to the animals in the zoo, but they are still caged. So it's still himsa. So that which affects physically is himsa. But if you are getting affected verbally, then that means you are taking others' words, others' opinions into your mind. That is your free choice. Nobody is forcing you to take others' opinions because you don't understand the truth, because you don't know anything about yourself. Because you don't know anything about yourself, you think what others saying is right. So that is your ignorance. So because of your ignorance, you are suffering. So your suffering is because of your ignorance when somebody verbally abuses you. So that doesn't come under himsa. So any time you are getting hurt because somebody says something, that is purely because of your ignorance. Okay. सर जैसे कहते हैं कि राइट वर्ड्स बोलो, किसी को अब्यूज नहीं करो. तो सर ने कहा है कि हमें दूसरों के शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पर यदि आप एक चिड़िया को पिंजरे में कैद करके रखते हैं, तो उसको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको क्षति पहुंचा रहे हैं. या जू में भी बेहतरीन खाना जानवरों को उपलब्ध कराया जाता है, पर उनको पिंजरे में रखकर उनके साथ एक तरह से शारीरिक हिंसा ही की जाती है. अगर आप वर्बली किसी के बोलने से प्रभावित होते हैं, दूसरों के शब्दों को आप ले रहे हैं, तो ये तुम्हारा खुद का चुनाव है. कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा है कि आप उसे लें.
क्योंकि आप स्वयं को नहीं जानते हैं कि आप क्या हैं, आप अज्ञानी हैं, इसीलिए दूसरों के शब्दों के अनुसार अपने आप को आइडेंटिफाइड कर लेते हैं या जोड़ लेते हैं, इसीलिए आप दुखी हो जाते हैं। अगर आप हर्ट हो रहे हैं तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि आप खुद ये चुनाव के द्वारा, उसके वर्ड्स के द्वारा अपनी अज्ञानता के कारण दुखी हो रहे हैं। थैंक यू। So next comes the third is Sneha Dharma, Mitra Dharma, friendship. It is our responsibility and it is our duty to make friendship with every living being. We have to initiate friendship. So when I say dharma, that means duty. That means we have to initiate the friendship. We have to seek the friendship. All the time we have to seek the friendship. This is Sneha Dharma. Suppose we go for a gathering, we go for a retreat, or we go for some spiritual annual gathering or conference. When we meet a fellow seeker, we have to initiate the friendship. We should say, hi, how are you? Where did you come from? Which city you are from? Which country you are from? Tell about yourself. So you have to initiate and make friendship. This is Sneha Dharma. And you have to have friendly approach towards your family relationships. With everybody, you have to have friendship. If somebody is thinking bad about you, you think good about them, because that is Sneha Dharma. If somebody is jealous on you, you wish them well. The more you wish another person well, the more the other person becomes a friend to you. So the third most important dharma is Sneha Dharma, my dear friends. You see, in India, all gods and goddesses, they have their companion as animals or birds. Every god and goddess has some birds and animals as their companion. That represents friendship. Even Jesus is always pictured with a lamb in his arms. Friendship with every living being, not only with humans, friendship with every living being. And this is where, in the Sneha Dharma, the equality comes. Nobody is greater than nobody, and nobody is lesser than anybody. The equality, when you are able to see everybody as your equal, then you are in Sneha Dharma. The more you listen to others, the more you are practicing Sneha Dharma. You should always have a listening ear. Some people have superior complex. They think they are greater than others. For all the people who are having superior complex, they should listen more. They should speak less and listen more. The more you cultivate the listening habit, the more the friendship develops. The more you are in Sneha Dharma. Listening to others, equality, and friendship with every living being. Initiating the friendship. You should make the first attempt to initiate the friendship, to seek friendship, and have a friendly approach with everybody you interact with. That is Sneha Dharma. Okay, madam. तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट सर ने कहा है स्नेह धर्म अर्थात मित्र धर्म। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सबसे दोस्ती करें। आप जब एक दोस्त को ढूंढते हैं और उसे प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, तो वो आप एक स्नेह धर्म को फॉलो कर रहे हैं। मान लीजिए आप कोई गैदरिंग में जा रहे हैं या रिट्रीट में जा रहे हैं,
तो अगर आपको अपने समानी कोई साधक मिलता है तो आप उससे दोस्ती की पहल करते हैं, आप उससे उसका नाम, कहाँ रहता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये सब स्नेह धर्म का ही रूप है। और आपको अपना दोस्ती वाला रूप अपने सभी रिश्ते में भी रखना चाहिए। कोई भी आपके बारे में गलत सोचे तब भी आप उसके बारे में अच्छा ही सोचिए। अगर कोई आपसे जेलसी भी फील करे तब भी आप उसके लिए मंगल और अच्छा ही सोचिए, तो धीरे धीरे वो भी आपका फ्रेंड बन जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं लोगों के एक साथी होते हैं, जो या तो कोई बर्ड होती है या कोई एनिमल होता है। हर एक हमारे देवी देवताओं के साथ एक साथी है। ये जो जानवरों के साथ उनका जो कंपेनियनशिप है, उसकी जो उनकी मित्रता को दिखाता है। जीसस के भी हाथों में एक छोटी सी भेड़ का बच्चा आप हमेशा देखते हो। तो ये जो स्नेह धर्म कह रहा हूँ, वो संसार में जो भी जीवित प्राणी हैं उनके साथ आपको दोस्ती रखनी है। स्नेह धर्म से आप इक्वलिटी मतलब बराबरी मानते हैं। कोई भी आपसे उच्च नहीं है, कोई भी आपसे नीच नहीं है, हम सभी बराबर हैं। यही स्नेह धर्म हमें सिखाता है। जितना आप दूसरों को सुनेंगे, जितना आपके कान श्रवणशील रहेंगे सुनने के लिए, उतने ही आप इस धर्म को निभा पाएंगे। कई लोगों को बहुत सुपीरियर कॉम्प्लेक्स होता है कि वो महान प्राणी है। उनका सबसे पहला काम है कि वो लोगों को सुने, ताकि और कम बोले, तभी वो स्नेह धर्म को फॉलो कर सकते हैं। जितना आप अपने सुनने को विकसित करेंगे, जितना आप लोगों से दोस्ती करते जाएंगे, उतना ही आपका स्नेह धर्म बढ़ते जाएगा। तो दूसरों को सुनिए, बराबरी का दर्जा दीजिए और सभी लोगों से फ्रेंडशिप के लिए, मित्रता के लिए पहल करें। जो भी आपसे मिलते हैं उन सभी से आपकी मित्रता का भाव होना चाहिए। थैंक यू। So what we are discussing today now is the dharmas, which means it's a duty we all have to practice, and there is no choice. It is a dharma. Dharma is a duty. We have to do it. If you don't do it, then you are in a dharma. And why we have to follow the dharma? For our saubhagya, for our welfare. So I'm going to give you 10. So today I have given you 3. And we'll continue it tomorrow. It's a quite interesting subject, a deep subject. You have to contemplate. When you are writing down the points, you reflect that, am I following this dharma? Am I doing this duty? If not, I will immediately integrate in my life. So that should be your approach and attitude. Okay, friends? We'll discuss the rest of the dharmas tomorrow. And I hope you are integrating what all we discuss, you are integrating in your day-to-day life in terms of journaling, practicing mindfulness. We have almost come towards the end, only 3 more days left. So practicing mindfulness really helps you to be aware. So practice mindfulness when you're eating, when you're cooking, cutting vegetables, cleaning the houses, when you're taking shower, practice mindfulness. Thank you very much. See you tomorrow. Namaskar. Thank you. तो सर ने कहा है कि जो भी मैं तुम लोगों को ये बता रहा हूँ वो आपको पालन करना है। ये आपका चुनाव नहीं है, ये आपका धर्म है, इसको पालन करना है। और हमें सब इसको क्यों पालन करना है? ताकि हमारे जीवन में सौभाग्य आए, समृद्धि आए। कुल 10 धर्म हैं, जिनके 3 धर्म मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर लिया हूँ। आप इन सब पे चिंतन करिए कि क्या मैं इसका पालन कर रहा हूँ, और यदि मेरे जीवन में कोई भी इस धर्म एक भी धर्म की कोई कमी है तो मैं इसे तुरंत अपने जीवन में उतारूं और इसका पालन करूं। आप रोज अपने आप को इंटीग्रेट करिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। हमारे पास केवल 3 दिन और शेष रह गए हैं। जो भी मैंने आपको डाइट फॉलो के लिए कहा है वो भी करिए, और माइंडफुलनेस का आप अभ्यास पूरे समय अवेयर होके करते रहिए। इससे चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप सब्जी काट रहे हो या नहा रहे हो, पूरे समय आप अवेयर रहिए और इन सब चीजों का
आप पालन करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। सर ने जो हमें बताया है उन सब का हमें पालन करना है, और कई लोग इसके नोट्स बना रहे हैं और कई लोग इसके नोट्स नहीं भी बना रहे हैं। तो आप लोग अगर हो सके तो फिर से जाके इसके वीडियोस देखकर आप लोग नोट्स बनाइए, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो और ज्यादा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठता है। और पत्री सर ने एक बहुत ही अच्छी चीज कही थी आर्ट ऑफ लिसनिंग के लेक्चर्स में, कि जब हम सिर्फ सुनते हैं, उसके पर मनन नहीं करते अर्थात चिंतन नहीं करते, तो हम धीरे धीरे उसको भूल जाते हैं। पर यदि आप जो सुनते हैं रात को या दूसरे दिन सुबह, आप जब उसके ऊपर चिंतन करते हैं तो वो आपकी बुद्धि में एक तरह से प्रवेश कर जाता है, और जब बुद्धि में प्रवेश करेगा तभी आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने जीवन में, मतलब अभ्यास कर पाएंगे। तो अभ्यास के लिए कंटेम्पलेशन, चिंतन करना जरूरी है, और चिंतन करने के लिए आपको राइट वे में सुनना जरूरी है। आप काम करते समय कोई भी सेशंस को मत सुनिए, अगर काम है तो आप कर लीजिए, शाम को या रात को आप इस वीडियो को देखिए, उसके नोट्स बनाइए, आपको ध्यान रहेगा। और एक बार जब आप सुन लेते हैं और एक बार जब लिख लेते हैं, तब आपको आपकी बुद्धि में उसको अभ्यास करने की क्षमता आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आज बहुत ही प्यारा सेशन था। आज छोटा जरूर था, पर आप चिंतन करिए, मनन करिए, और जो भी उस रिट्रीट में पार्टिसिपेट करना चाहता है फ्रेंड्स, तो मैं फिर से एक बार आप लोगों को नया नंबर दे देती हूँ। आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ज्ञान भारत में जो लोग भी हैं उनको वो नंबर दे दिए गए हैं। ये यूट्यूब वाले फ्रेंड्स को बता रही हूँ, 8830296607, 8830296607। इसमें आप केवल एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपको रिट्रीट के लिए या ज्ञान भारत में जुड़ने के लिए आपको अलाउ कर दिया जाएगा। कोई भी उनको कॉल नहीं करे, पर हाँ मेंशन करिए कि आपको ज्ञान भारत में जुड़ना है कि सिर्फ रिट्रीट में जुड़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, कल और इसी डिफरेंट काइंड्स ऑफ धर्म के बारे में जानेंगे। तो कल मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, जब तक है।